Hello, dear children. So it's time to begin prose number 7, a visit to Cambridge, and this belongs to Honeydew. Okay, the book is Honeydew, and usually we begin our lesson along with before you read section, and also we discuss the synonyms and antonyms, right? Now look at this. Before you read section, this is the story of meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. So, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. Oh, as you can see, this particular story is about two people. Okay, two persons, both are physically challenged, means they have different disabilities. Okay, or they are differently able. Okay, Stephen Hawking, you know this person very well. He is a famous personality, and a discovery show, also a show on a Discovery Channel, also just gave him a lot of fame. But apart from that, he is a fantastic scientist, right? He met an Indian. Okay, as you can see, he met an Indian, and let's have a look that how he used to just communicate. He used to communicate through the punch codes. Okay, as he was unable to speak, so there was a keypad which he used to just operate, and the words used to appear and it was converted into voice. Then this is how he used to speak through machine. Okay, so Firdos Kanga is writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones. So Kanga was a person from India. Okay, he had brittle bones, bones which are very weak. Brittle means very weak, easily, which can be easily broken. Okay, उसे brittle बोला जाता है. तो that tended to break easily when he was a child. जब वो छोटा था, easily उसके bones break हो जाते थे. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. So, in fact, Kanga has to just walk through a wheelchair. He used to travel and just stalk the distance through the wheelchair. Okay. The two great men exchange their thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so called normal people react to the disabled. So, this is how both these special personalities met each other and what kind of discussion they had. As Hawking is unable to speak, but वो पंच कोड मशीन से किस तरह से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब जो मशीन में से आवाज़ आ रही है, these are nothing but thoughts of Mr. Hawking. Okay, so how did they speak? This is what we are going to know. Okay, now let's have a look at the synonyms and antonyms. Just have a look carefully. So the first word disembodied means separated. Attached will be its antonym. Disintegrated means crumbling. Integrating will be its antonym. Buoyant means able to rise, मतलब आगे बढ़ने की ताकत रखना. Demoralized will be its antonym, मतलब moral down रहना, हिम्मत ना होना. Corpses means dead bodies. Alive will be its antonym. Gleefully means happily. Sadly will be its antonym. Rumbling means deep, heavy sound. No antonym available for this. Greening, laughing. Whispering means धीरे धीरे बात करना. उसका बहुत जोर से हंसने का एंटोनिम हमने ले लिया. Whispering, धीरे धीरे बात करना. Okay. Dodged, to move quickly. Stay will be its antonym. Okay. Okay, so let's begin with paragraph number 1 here. And there is a glossary also. So, scholar of astrophysics. Astrophysicist means scholar of astrophysics, branch of physics dealing with stars, planets, etc. So, physics which deals with the subject physics is there, it is branch of science only, and wherein we study the stars, movement of the stars, planets, etc. Okay, that is known as astrophysicist. Okay, Cambridge was my metaphor for England. Okay, let's see who wrote this, who is the author. Okay, so Firdos Kanga himself is the author. As we know that he met him, Firdos himself met him, whom? Mr. Hawkins. फिरदौस जी वो हॉकिंग्स से मिलने गए थे. ओके, ही इज़ एन इंडियन, और वो ही नरेट कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that
When I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. So Cambridge उनके लिए एक मेटाफर था. मेटाफर मीन्स a kind of very special thing. Okay, England में. And it was strange that when I left, it had become altogether something else. So when he left Cambridge, इंग्लैंड जब छोड़ दिया, कैम्ब्रिज जब छोड़ दिया कांगा जी ने, दैट फिरदोज, so then what happened here? So he brought a lot of memories in his mind when he came back to India. Okay, why? Because he met Stephen Hawking. Okay, it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor. Okay, one of the guide told him. What did he tell him? That there is a man called Stephen Hawking. He has become disabled due to an illness. Okay, but वो फिर भी बहुत बड़ा सक्सेसर है. मीन्स ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. Successor to Isaac Newton. Okay, he's a successor to Isaac Newton means he is actually giving advanced knowledge of what Isaac Newton has provided to the world. Isaac Newton का जो knowledge है उसमें और एडवांस तरीके से रिसर्च करके हॉकिंग ने अपने थेसिस दी है दुनिया को. whose chair he has at the university. Okay, and he is a part of that university also. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest best seller ever lived here. So he was unaware. जब उन्हें पता चला, he got fascinated कि ये जो दुनिया की सबसे बेस्ट सेलर बुक है, A Brief History of Time, written by Stephen Hawking, और उसको लिखने वाला famous scientist is just next to मिस्टर फिरदौस कांगाज स्टे इन कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज में जहाँ रहते थे उसके ठीक करीब ही वो भी रहते हैं, स्टीफन हॉकिंग. व्हेन ही गॉट दिस न्यूज़ ही गॉट सो फैसिनेटेड. ओके, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन आई रश्ड टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट स्टेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. सो आफ्टर अ वॉकिंग टूर विद अ गाइड, जैसे उसे गाइड से पता चला कि हॉकिंग वहीं पे पास में रहते, तो ही स्टार्टेड फाइंडिंग अ टेलीफोन ताकि वो फ़ोन करे उन्हें मिलने के लिए. Okay, there was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. Okay, तो उसने समय मांगा. जिसने फ़ोन उठाया उस पर्सन ने, ही वॉज असिस्टेंट ऑफ मिस्टर हॉकिंग, एंड मिस्टर फिरदौस कांगा रिक्वेस्टेड हिज असिस्टेंट. जब उन्होंने फ़ोन उठाया, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, ही रिक्वेस्टेड दैट ही वांट्स टू मीट हिम. ही वांट्स टू मीट मिस्टर हॉकिंग बिकॉज ही इज़ ऑल्सो डिसेबल्ड एंड इट्स क्वाइट वर्दी टू मीट हिम एंड ही इज़ क्वाइट फैसिनेटेड टू मीट हिम. उसकी बातों से लग रहा था दैट ही वांट्स टू मीट हिम. ओके, बट प्रोफेसर हॉकिंग मिल पाएंगे या नहीं ये बाद में बताया उन्होंने. बट ही स्टिल सेड हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा रुक जाओ, वो आपको बताते मिल पाएंगे नहीं. फ्रॉम 3:30 to 4. ओके, सो फ्रॉम 3:30 to 4 ही अग्रीड टू मीट. इट मीन्स ही गॉट द रिस्पॉन्स फाइनली कि आप 3:30 से 4 ऐसे आधे घंटा आप ले सकते हो, आप मिलो उनसे. सो ही अग्रीड टू मीट हिम एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगे मिस्टर कांगा. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ other people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. So here this line expresses that a feeling of a physically challenged person. एक physically challenged person की एक feelings यहाँ पे लिखी हुई है कि it is means we being disabled we encourage the world but actually their life is quite challenging. Okay, and they are unable to draw check. In fact, मतलब बैंक मतलब वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते खुद से. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू. एंड येस, व्हेन यू सी समवन हु इज़ एज सिमिलर एज यू, तो आपकी हिम्मत बढ़ती है. ऑब्वियसली व्हेन अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन विल सी स्टीफन हॉकिंग, मिस्टर कांगा, दोनों की हिम्मत ज़रूर आपस में तालमेल बिठाकर बढ़ेगी. ऑब्वियसली दिस लेसन इज़ क्वाइट नाइस एक्चुअली. आप लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए. एंड सडनली ओके, दिस पार्ट इज़ डन. So achieving something huge, then you know how much
is possible and you reach out further than you ever thought you could. और ऐसे किसी इंसान से जो बहुत हाईली क्वालिफाइड एंड फेमस, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है, व्हेन यू मीट सच पर्सन यू एंटर अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर लाइफ. आपका नज़रिया दुनिया को देखने के लिए बदल जाता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स ऑल्सो. Okay, so this is what it is mentioned in these two lines. Okay, I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. Okay, so I haven't been brave. मैं brave नहीं था. उसमें कंप्यूटर में अभी यहाँ पे इंटरव्यू चालू हो गया. ओके, अभी यहाँ पे कंप्यूटर चालू हो गया एंड देन हिज वॉइस स्टार्टेड कमिंग. आई हैड नो चॉइस. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. स्टीफन हॉकिंग बोले, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द reality of his disintegrating body was a choice. Okay, surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. तो ये क्या है? एक तरह से श्योरली आई वांटेड टू से मतलब वो कहना चाहते थे. कौन कहना चाहते थे? मिस्टर कांगा. दैट लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस. तो ये इन्फॉर्मेशन लीक मिस्टर कांगा ने फ्रॉम मिस्टर हॉकिंग दैट ही wanted to just stay with his disintegrating body. मतलब उनके पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची. he'll have to stay in this disintegrating body. मतलब ये टूटी फूटे शरीर के साथ ही उन्होंने जीवन निकालना है. but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. So every time whenever Mr. Kanga spoke to Mr. Hawking, so he got very नॉर्मल रिस्पॉन्सेज. जैसे वो कॉमन इंसान जैसे बात करते वैसे वो रिस्पॉन्स दे रहे थे. बट ही वॉज फीलिंग वेरी अपसेट ऑल्सो. मिस्टर कांगा बहुत अपसेट फील कर रहे थे ये सब सुन के. देर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम. सो इनफैक्ट ही यूज टू मूव हिज फिंगर. बाकी भले ही बॉडी पार्ट्स उसके बहुत मूव नहीं कर पाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स ही यूज टू टाइप द वर्ड्स. है ना, मतलब वो पूरी तरह से कैसे स्पीड में भी टाइप नहीं कर पाते होंगे बिकॉज ऑलरेडी हैंड इज़ पैरालाइज्ड. और उन वर्ड्स के थ्रू उन्हें मशीन में से आवाज़ आने लगती थी और बातें सुनाई देती थी. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, एवरी सो ऑफन हिज आइज वर्ड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. ओके, सो एवरी सो ऑफन मतलब हर बात बोलते वक्त थोड़े थोड़े समय में वो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे. ओके, फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ आंखें बंद कर देते. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश. और उनके एंग्विश मीन्स वो तड़प जो है जीने की, एंग्विश, दैट स्ट्रेस. एंग्विश मीन्स स्ट्रेस ऑल्सो. ओके, तो वो नज़र आ रही थी. Buoyant means intensely active and vibrant. So there is a glossary here. Intensely active and vibrant. Okay. With thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. Okay. And sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases. ओके, सो इस तरह से मतलब फ्रोज़न फ्रेजेस मीन्स ऐसे कुछ फ्रेजेस जो कि एक जगह जमे हुए हैं, उस मशीन के थ्रू बाहर आ रहे हैं, वो उसे सुननी पड़ रही है मिस्टर कांगा को. ओके, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस. एंड द सेंटेंसेस तो बाहर आ रहे हैं बट उनके सेंटेंसेस बहुत स्टिफ है, मीन्स एक जगह पे जकड़े हुए हैं. लाइक कॉर्प्सेस. कॉर्प्सेस मीन्स डेड बॉडीज़ के साथ वो उन सेंटेंसेस को कंपेयर करे. कॉर्प्सेस मीन्स डेड बॉडीज़. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? Okay. So this is the fact said by Mr. Hawking. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. Fine. तो ये जो लास्ट सेक्शन है हम लोग अभी पेज नंबर 97 ऑलमोस्ट डन. 98 एंड 99 विल बी कवर्ड इन माई नेक्स्ट लेक्चर. उनके कॉन्वर्सेशन किस तरह से आगे बढ़ता है दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, टेक केयर.